Good morning, my dear students and my dear friends. Hi, this is Subir and welcomes you all on today's class. In this video, we will understand about the spatial quadrilaterals. Okay, so we will understand about the spatial quadrilateral. So first of all, let me introduce what is meant by quadrilateral. In this figure, you will see that this is a simple closed figure made up of four line segments. Okay, so we can see that quadrilateral is a simple closed figure having what? Having four sides, four angles, and four vertex. Okay, okay. So let's move toward the first spatial quadrilateral. That is what? Parallelogram. So this is a figure of parallelogram. Okay. So this is what? This is also a quadrilateral, but it is a spatial quadrilateral. Okay. This parallelogram have four sides. Okay, this parallelogram have four sides, four vertices, and four angles. So this is a quadrilateral. Okay, and what is the name of this quadrilateral? It is a special quadrilateral. Name is parallelogram. So what is the speciality of the parallelogram? Okay, what is the speciality of parallelogram? These two sides, listen everyone here, these two sides are opposite sides. Okay, and there is one more pair of opposite side, which is this. This is a pair of opposite sides. Okay, so these two are opposite and these two are also opposite sides. So actually there are two pair of opposite sides. Okay, so if the one side is 5 centimeter, so another one is also 5 centimeter. Okay, and if this side is 10 centimeter, so this is also a 10 centimeter. Means what? These two sides are opposite sides. Yes, and these two sides are also opposite sides. So we can conclude that what we can conclude? We can conclude that opposite sides are equal. Okay, parallelogram में क्या होता है? Opposite sides are equal. Okay, now let's move towards the second property of parallelogram. If I will extend these two sides, if I will extend these two sides, extend करना मतलब लंबा करना होता है या फिर extend करना यानी कि stretch करना है, ठीक है, दोनों साइड से stretch करना होता है. So what is that? If I will draw a line or a line segment along these sides, so they will cross each other? No, they will. Yes, look here. These two lines, this is lines. I'm using the word lines. Okay. These two lines are touching each other. They maybe cross each other. No, they will not cross each other. And these two lines are also not crossing each other. Okay, so what? These two lines are parallel lines and these two lines are also parallel lines. Means what? We can say that the opposite side of a parallelogram are parallel. Okay, why the name of a parallelogram is parallelogram? Parallelogram का नाम parallelogram क्यों है? Because the opposite sides are parallel. ठीक है, opposite side जो है वो parallel होती है और equal भी होती है. So there are two properties of parallelogram. The first property of parallelogram is opposite sides are equal, and the second property is opposite sides are parallel. So we can conclude that parallelogram have what? Opposite side parallelogram has the opposite sides of parallelogram are equal and parallel. Okay, so I hope you understood. So look everyone, we have learned about the opposite sides, but what about the adjacent sides? Adjacent sides क्या होती है? Yeah. Adjacent sides are those sides having common endpoint. Again I'm repeating, adjacent sides are the sides having a common endpoint. Look everyone, these two sides are adjacent sides, these two sides are also adjacent sides. These two sides are also adjacent side. These two sides are also adjacent side. If the two sides have a common endpoint, okay, if the two sides have common endpoint, then the sides are said to be adjacent sides. मतलब पड़ोसी side, ठीक है, पड़ोस में जो है. Okay, so I hope you got it about the opposite sides and adjacent sides. Okay,
Now let's move towards the second quadrilateral, which is also a special quadrilateral. And this special quadrilateral is what? Rectangle. Okay, which is a, what is this? This is a rectangle. Okay, so we have already learned about the rectangle. Okay, rectangle is a quadrilateral having four sides. It is also quadrilateral. Quadrilateral है तो चार sides होंगे, चार angles होंगे और चार vertex भी होंगे. ठीक है. So, but what is the speciality of rectangle? What is the speciality of rectangle? Okay, this rectangle also have the same property like parallelogram because it is also a parallelogram. मतलब ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है. ठीक है. एक्चुअली द नेम इज गिवन, इट इज अ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल और स्पेशल पैरेललोग्राम, दैट इज रेक्टेंगल. ओके, सो रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स है, द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स इज इक्वल, इक्वल है. ओके, दीज टू साइड्स आर इक्वल एंड दीज टू साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. ओके, ओके, sorry. So these opposite sides are not only equal, they are parallel to each other. वो भी क्या है? Parallel है. If I will draw a line or a line segment along the sides, they will not cross each other. वो एक दूसरे को cross नहीं करेगी. So what? Opposite sides are parallel and equal. बट व्हाट इज द स्पेशलिटी? पैरेललोग्राम से ये थोड़ा सा अलग क्यों है? बिकॉज इसके सारे एंगल राइट एंगल होते हैं. ऑल द एंगल्स आर ऑल्सो सेम. सो व्हाट वी कैन कंक्लूड? वी कैन कंक्लूड दैट these two sides are parallel, these two sides are parallel, okay, and all the angles are equal, all the angles are equal. Okay, so this is a rectangle. Now let's learn about this square. अब हम लोग स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. So what is meant by square? Actually square is also a parallelogram. Means ये quadrilateral तो है लेकिन स्पेशल quadrilateral है. ये सारी की सारी पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज को भी फॉलो करता है. ठीक है. सो इट इज अ स्पेशल पैरेललोग्राम. ओके, एंड और स्पेशल क्वाड्रिलेटरल इन विच all the sides are same, all the sides are same, all the angles are also same, all the angles are same. Okay, दोनों के दोनों एंगल्स भी सेम, मतलब चारों के चारों एंगल भी सेम है और चारों के चारों साइड भी सेम है. ठीक है. और व्हाट? Opposite sides are parallel and equal. Opposite sides are parallel and equal. Opposite sides parallel है, all the sides are equal and हाँ मैंने बोला कि opposite sides parallel और equal है तो है. Opposite not only parallel, not only opposite sides are equal, all the sides are equal. चारों के चारों side equal है. ठीक है. So I hope you understood about the square. Now let's learn about the rhombus. What is mean by rhombus? Rhombus is also बस एक्चुअली स्क्वायर ही है, स्क्वायर ही है. ठीक है. ठीक है, स्क्वायर को क्या किया, थोड़ा सा पीछा कर दिए तो रोम्बस बन गया. ठीक है. दिस इज अ रोम्बस. सो रोम्बस हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज. ऑल द साइड्स आर सेम, चारों चारों साइड सेम है. यू कैन सी इन द फिगर all the sides of a all the sides of rhombus are same. Okay, but all the angles are not same. हाँ, angles are different. Always remember, rhombus एक ऐसा पैरेललोग्राम है. Yes, it is looking like a parallelogram. मैंने आपको पैरेललोग्राम में ये बताया था कि अपोजिट साइड सेम होती है, लेकिन ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है, यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड सेम है बट चारों एंगल सेम नहीं है. हाँ, ठीक है. यस, I hope you got it. So what is rhombus? Rhombus क्या है? Quadrilateral whose all the sides are equal and opposite sides are parallel and opposite sides parallel भी है. Let's understand about the this tree diagram. Okay, ये tree diagram देखो. Quadrilateral, special quadrilateral मतलब parallelogram. So what is parallelogram? Parallelogram वो है जिसकी अपोजिट साइड सेम होती है. ठीक है, और इक्वल होती है. मैं फिर से बोल रहा हूं, पैरेललोग्राम इज अ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल हैविंग अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल. ओके, वेरी गुड. फिर पैरेललोग्राम से हम लोग चलते हैं रोम्बस की ओर. सो व्हाट इज रोम्बस? एक्चुअली रोम्बस इज अ स्पेशल पैरेललोग्राम. रोम्बस इज अ स्पेशल पैरेललोग्राम whose all the sides are equal. ओके, पैरेललोग्राम मतलब क्या? अपोजिट साइड
ओके, वो पैरेललोग्राम का ही हिस्सा है, क्वाड्रिलेटरल की फैमिली है ये, ठीक है। व्हाट इज दिस? इट इज अ फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसमें और भी मेंबर्स आते हैं, लेकिन वी विल डिस्कस अबाउट दैट लेटर। तो दिस इज रोम्बस। रोम्बस में क्या है? पैरेललोग्राम की ही प्रॉपर्टीज है। ऑल द साइड्स आर सेम, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, okay, opposite sides are parallel. Okay, now let's move towards the rectangle. Rectangle is what? Rectangle में क्या था? All the angles are same, opposite sides are same and parallel. Okay, opposite sides same होगी और parallel भी होगी. Now let's learn about the special, which is very special quadrilateral, which is a square. Actually square में रोम्बस की भी प्रॉपर्टीज है और रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टीज है। ओके, रेक्टेंगल में क्या है? रेक्टेंगल में ऑल द एंगल्स आर सेम, सो एंगल इज टेकन फ्रॉम द रेक्टेंगल। एंगल्स ले लिए रेक्टेंगल की तरफ से, और ऑल द साइड्स आर सेम। रोम्बस की सारी साइड सेम होती है, तो साइड्स ले लिए। साइड किससे ले लिए? रोम्बस से। तो इट इज अ स्पेशल क्वाड्रिलैटरल हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस एंड रेक्टेंगल। स्क्वायर में रोम्बस की भी सारी प्रॉपर्टीज है और रेक्टेंगल की भी सारी प्रॉपर्टीज है। सो आई होप you understood about this video, and if you like this video, so please you can tell in the comment box if the comment box is on. Otherwise you can send me on WhatsApp. Okay, if you have any issue or if you have any feedback related to this video, you are most welcome. Okay, bye everyone, have a good day and take care, and thank you for your valuable time. Bye.